ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद भुज्युर्ब्राह्मण पेज नंबर 747। टीका नित्य कर्म निवर्त्यम व्यवधानान्तरम मा भूत अज्ञानम एव तन्निवर्त्यम भविष्यति। तथा च मोक्षस्य कर्म कार्यत्वं शक्यम उपचरितुम इति शंकते। नित्य कर्म निवर्त्यम व्यवधानांतरम मीन्स व्यवधानम इज अज्ञानम, व्यवधानांतरम मीन्स समथिंग अदर देन अज्ञानम इज रिमूव्ड बाय नित्य कर्म। दिस इज नॉट द केस, ही सेज। नित्य कर्म निवर्त्यम व्यवधान, पूर्वपक्षी विल सजेस्ट दिस, नित्य कर्म निवर्त्य इज अज्ञानमेव न व्यवधानांतरम, अज्ञानमेव तन्निवर्त्यम भविष्यति। तथा च मोक्षस्य कर्म कार्यत्वं शक्यम उपचरितुम, एंड देयरफॉर मोक्ष इज कर्म कार्य। विच कर्म कार्य? नित्य कर्म कार्य। उपचरितुम शंकते। भाष्य अज्ञानमेव निवर्तयति इति चेत्। So Mimamsaka says it is removing ajnanam only. Why you want to have something else removed by nitya karma? Ajnanam eva nivartayati iti chet. कर्मणो ज्ञानाद् विलक्षणत्वात् न अज्ञान निवर्तकत्वम् इति उत्तरम् आह। कर्मणो ज्ञानाद् विलक्षणत्वात्, कर्म इज विलक्षण फ्रॉम ज्ञान, ज्ञानाद् विलक्षणत्वात् न अज्ञान निवर्तकत्वम्। It is like this. Siddhanti says jnanam will remove ajnanam. Purvapakshi says karma can also remove ajnanam. It is like saying light will remove darkness. So tamo nivritti will happen through prakasha. So Purvapakshi says tamo nivritti can happen through danda also. I will use danda and remove andhakara. You are saying something, I will also say something. Whether what I am saying makes sense or not doesn't matter. So like that also, that is why it is called Purvavaksha. Na, why? Vilakshanatvat. There is Veda. Karmano jnanad vilakshanatvat na ajnana nivartakatvam. Vailakshanyameva prakatayati. Anabhivyaktihi ajnanam. Abhivyakti lakshanena jnanena virutyate. Between jnana and ajnana there is virodha.
between jnana and between karma and ajnana, there is no virodha. So how jnana can do nasha of ajnana? Karma will not do nasha of ajnana. This is the vilakshanata. Anabhivyakti is ajnanam, not expressing something. Aprakash rupam is ajnanam. Prakash rupam is jnanam. So between them there is virodha. कर्म तो न अज्ञानेन विरुध्यते तेन ज्ञान विलक्षणम कर्म कर्म अज्ञानेन न विरुध्यते therefore karma's the way of functioning and jnana's way of functioning are different. कर्मणो अज्ञान विरोध अभावेन न विरुध्यते कर्म is not अज्ञान विरोधी. टीका इतश्च ज्ञान निवर्त्यम एव अज्ञानम इत्याह. ज्ञान निवर्त्यम एव अज्ञानम. फॉर दिस रीजन ऑल्सो व्हाट इज दैट? यदि ज्ञानाभावो यदि संशय ज्ञानम यदि विपरीत ज्ञानम वा उच्यते अज्ञानम इति सर्वम ही तज्ज्ञानेनैव निवर्त्यते न तो कर्मणा अन्यतमेनापि विरोधाभावात्. व्हाट इज अज्ञानम? So somebody says ajnanam is abhava rupa. It is jnana bhava. This is vikalpa 1. Second vikalpa is samshaya jnanam is ajnanam. Third vikalpa is viparita jnanam is ajnanam. So in all the three, jnanam only will remove that ajnanam. Whichever way you define ajnanam. Tat sarvam jnanena eva nivartyate, na tu karmana. Why? Because karma does not have virodha with any one of them. टीका अन्यतमेन नित्यादिना व्यस्तेन समस्तेन वा श्रौतेन स्मार्तेन वा इत्यर्थः. अन्यतमेन नित्यादिना कर्मणा व्यस्तेन समस्तेन, इंडिविजुअल कर्म और ऑल कर्म पुट टुगेदर कैन नॉट डू विरोध ऑफ अज्ञानम. श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म दे ऑल्सो कैन नॉट डू विरोध ऑफ अज्ञानम. कर्म अज्ञानयोर अविरोध हेतु अर्थः. The hetu for that is karma ajnana yoho avirodha. There is no virodha. So that virodha bhavat is given, that hetu in the bhashya at the end. That virodha bhavat, that hetu is this. Karma ajnana yoho virodha bhavat. अज्ञान निवर्तकत्वम कर्मणो न अन्वय व्यतिरेक सिद्धम किंतु अदृष्टमेव कल्प्यम इति शंकते. अज्ञान निवर्तकत्वम कर्मणः न अन्वय कर्मणः अज्ञान निवर्तकत्वम. अज्ञान निवर्तकत्वम will be there in कर्म. अज्ञान निवर्तकत्वम कर्मणः न अन्वय व्यतिरेक सिद्धम. It is not अन्वय व्यतिरेक सिद्धम. किंतु अदृष्टमेव कल्प्यम. पूर्व पक्षी says it is not, you will not know this. अदृष्ट कल्पना अथ अदृष्टम अपि कर्मणाम अज्ञान निवर्तकत्वम कल्प्यम इति चेत्. Some adrishta kalpana we will do by which ajnana nivritti will take place. Iti chet na. Tika. Drishte sati adrishta kalpana na nyaya. This is also important vakya. Drishte sati adrishta kalpana na nyaya. If something is drishta, you don't have to do kalpana for some adrishta vastu. Na nyaya. Nyaya, what is the sutra? धर्मपत्यर्थ न्यायादनपेते. धर्मपथ्य अर्थ न्यायादनपेते. So न न्याया इति परिहरति. 9 नंबर टिप्पणी.
ज्ञान रूपे निवर्तके, ज्ञान रूपे निवर्तके दृष्टे means when you see jnana rupa nivartaka, then you don't need to do kalpana of some other nivartaka. That is what it means. न ज्ञानेन न ज्ञानेन अज्ञान निवृत्तौ गम्यमानायाम अदृष्ट निवृत्ति कल्पना अनुपपत्ते। ज्ञानेन अज्ञान निवृत्तौ गम्यमानायाम, गम्यमाना means न्यायमान, this is already known. ज्ञानेन अज्ञान निवृत्ति will take place, then अदृष्ट निवृत्ति कल्पना is not appropriate. उक्तम अर्थम दृष्टांतेन बुद्धावारोहयति, this अर्थम दृष्टांतेन बुद्धौ आरोहयति। यथा अवघातेन व्रीहीणां तुषनिवृत्तौ गम्यमानायाम अग्निहोत्रादि नित्यकर्म कार्या अदृष्टा न कल्प्यते तुषनिवृत्ति ही। व्रीहि is there, from that tusha nivritti we have to do. So what you have to do? So to vrihi is the complete with the grain. Then there is tusha, which is husk, and what remains is the grain. So husk plus grain is there. You do avaghatana, and it will remove the husk. You don't have to do kalpana. Here we will do agnihotradi nitya karma, then husk will go. That is this vakya. यथा अवघातेन व्रीहिणाम तुष निवृत्तौ गम्यमानाया, when this is already known, अग्निहोत्रादि नित्य कर्म कार्या अदृष्टा तुष निवृत्ति ही न कल्प्यते। This, in many things we have to know how to think clearly. That is what he says. You don't have to do some kalpana, this happened, that happened. It's straightforward. अदृष्ट इति छेदः, नित्य कर्म कार्या अदृष्टा कल्पना। अस्तु ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तिः, किंतु कर्म समुच्चितात् इति आशंका। ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तिः अस्तु, ओके, बाय ज्ञानम अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान नाश will take place. But what kind of ज्ञानम? कर्म समुच्चितात् इति आशंका। इन भाष्य तद्वद अज्ञान निवृत्तिरपि नित्य कर्म कार्या अदृष्टा न कल्प्यते। अज्ञान निवृत्ति is not some अदृष्ट कार्य arising from nitya karma. ज्ञानेन विरुद्धत्वं च असकृत कर्मणाम अवोचाम। ज्ञानेन विरुद्धत्वं, so many times we have said jnana and karma samuchaya cannot happen because jnana and karma have virodha. Jnanena viruddhatvam karmanam asakrit avochama. ननु कर्मभिः अविरुद्धमपि हिरण्यगर्भादि विज्ञानमस्ति, तथा च समुच्चितं ज्ञानम् अज्ञानध्वंसी भविष्यति। नेत्याः कर्मभिः अविरुद्धं, कर्मभिः अविरुद्धं किम्? अज्ञान, कर्मभिः अविरुद्धम अज्ञानम। कर्म and अज्ञान doesn't have virodha. विरुद्धमपि हिरण्यगर्भादि विज्ञानम अस्ति, हिरण्यगर्भ ज्ञानम is there, तथा च समुच्चितं ज्ञानम अज्ञानध्वंसी भविष्यति। So jnanam, Siddhanti is thinking of Brahma jnanam. Purvapakshi is thinking Hiranyagarbha vidya, Hiranyagarbha vijnanam. So samuchitam jnanam ajnana dvansi bhavishyati.
नेत्याः यद अविरुद्धम ज्ञानम कर्मभिः तदेव तद देवलोक प्राप्ति निमित्तम इति उक्तम विद्या देवलोकः यद अविरुद्धम ज्ञानम कर्मभिः which ज्ञानम is this हिरण्यगर्भादि विज्ञानम which is कर्मभिः aviruddham it doesn't have objection. So then what will it give you? Devaloka prapti. Vidya devalokaha iti shruteः. नित्यानां कर्मणां समुच्चितानां असमुच्चितानां च स्वरूपस्थितौ मोक्षे तत्प्रतिबंधक अज्ञानध्वस्तौ वा न अदृष्टं सामर्थ्यं कल्प्यम् इति उक्तम् इदानीं तत्कल्पनाम् अंगीकृत्यापि दूषयति. नित्यानां कर्मणां समुचित कर्म और असमुचित कर्म either way means समुचित with विद्या और समुचित without विद्या स्वरूप स्थितौ मोक्षे तत्प्रतिबंधक अज्ञान ध्वस्तौ वा न अदृष्टम सामर्थ्यम कल्प्यम. That either way it will not do means we don't have to do kalpana of some adrishta which has the ability to give moksha, which is in the form of swarupa sthiti. Swarupa sthitau moksha is samanadikana. Either swarupa sthiti moksha you define or tat pratibandhaka ajnana dhvasta. They both are va is given, so either way. Karma doesn't have that ability. Neither karma can give you swarupa sthiti nor karma can give you pratibandhaka ajnana nivritti. Whether that karma is samuchita or asamuchita. Idanim tat kalpanam angikritya dushayati. Now that if it is like this, then what is going to be the problem? If karma along with the vidya, samuchita or asamuchita, if it does ajnana nivritti, then what will happen? किंच अन्यत कल्प्ये च फले नित्यानां कर्मणां श्रुतानां यत् कर्मभिर्विरुध्यते द्रव्य गुण कर्मणां कार्यमेव न भवति किं तत् कल्प्यताम्. कर्मणां टीका यू सी फर्स्ट. कर्मणां नास्ति मोक्षे सामर्थ्यम् इति एतद् उक्तात् एव कारणात् न भवति किंतु अन्यच्च कारणं तत्र अस्ति इत्यर्थः. कर्मणां नास्ति मोक्षे सामर्थ्यम. कर्म डज नॉट हैव सामर्थ्य फॉर मोक्ष इति एतद् उक्तादेव बाय दिस उक्ति कारणात् न भवति किंतु अन्यच्च कारणं तत्र अस्ति. सो देन सम अदर कारणं शुड बी देयर इत्यर्थः. तदेव दर्शयितुं विचारयति कल्प्ये च. If you do kalpana that there is something other than karma which will give you moksha, because karma doesn't have moksha samarthyam, so something else you will have to do kalpana. Anyat kalpye cha phale nityanam karmanam shrutanam. In bhashya nityanam karmanam shrutanam yat karma bhir virudyate. So nitya karma कर्मभिर विरुध्यते द्रव्य गुण कर्मणाम कार्यमेव न भवति. कर्मभिर विरुध्यते is ज्ञानम. It will not be कार्य of द्रव्य गुण कर्म. What kalpana you will do? किं तत् कल्प्यता. So what is said is
if you do kalpana of this nitya karma having some phalam, because nitya karma no phalam is given, so Mimamsaka's suggestion is moksha. So we say no, moksha is not going to work. Nitya karma, some other phala kalpana. So then what it will be, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्मणाम कार्यमेव न भवति. It will not be the karyam, phalam of dravya guna karma. So what kalpana you will do? Kim tat kalpyatam? In Hindi they have said, इसके अतिरिक्त श्रुत नियत नित्य कर्मों के फल कल्पनीय होने पर जो द्रव्य गुण कर्म आदि से विलक्षण, उनसे जन्य नहीं होने से, द्रव्य गुण कर्म आदि से विलक्षण, उनसे जन्य नहीं होने से, अकार्य कारण रूप होने से उत्पत्ति आदि चतुष्टय से अतिरिक्त मोक्ष संज्ञक फल है, जिसमें कर्मों का सामर्थ्य ही नहीं देखा गया है, ऐसी फल की कल्पना करनी चाहिए. ऐसे फल की कल्पना करनी चाहिए, अथवा जिनमें कर्मों का सामर्थ्य देखा गया है, उस अविरुद्ध फल की कल्पना करनी चाहिए. द्रव्य गुण कर्म, that Hindi vakya is little too long, huh? Sanskrit is easy. Because when they try to, anyway. So द्रव्य गुण कर्मणाम कार्यमेव न भवति, यत् कर्मभिर विरुध्यते. What will be विरोधी? Any द्रव्य गुण कर्म कार्य will not be विरोधी of karma. So what kalpana you do? यस्मिन् कर्मणः सामर्थ्यमेव न दृष्टम तत्कल्प्यताम किं वा यस्मिन् दृष्टम सामर्थ्यम. So now what kalpana you will do? There where nitya karma, any karma has ability to do four types of things: utpadyam, apyam, samskaryam, vikaryam. Okay. So will you do this kalpana that karma phalam, nitya karma phalam will be something which is one of these four, because it is drishtam, that karma has such samarthya, or something which you have never seen, na drishtam, karmanaha samarthyam. What? It will give that which is not utpadyam, apyam, samskaryam, vikaryam, such moksha. What kalpana you will do? Siddhanti is asking Purvapakshi. So yasmin drishtam samarthyam means utpatyadi. It is given in the tika a little bit. कार्यत्व अभावम समर्थयते यस्मिन् निति, यस्मिन् कर्मणः सामर्थ्यमेव न दृष्टम्. पक्षांतरमाह किं वा आदर्वे सामर्थ्य विषयं विशदयति. Now he explains यच्च कर्मणां फलम् अविरुद्धम्. कर्मणां अविरुद्धं फलं किम्? कर्मणां अविरुद्ध कर्मणां फलम is not against any one of these. So that kalpana you will do. If you do that kalpana, moksha will be either utpadya, whatever. That is not moksha. Katham iha nirnayah. How did you do this nirnaya? Purusha pravritti jananaya avashyam chet karma phalam kalpayitavyam. Because some karma phala kalpana you will do for purusha pravritti. Purvapakshi only said that, otherwise manushyaha na pravarteran. Okay, purusha pravritti janaya some karma phalam kalpitavyam. Kalpayitavyam phalam iti sambandha. Karma phala kalpana we will do. उत्पत्त्यादीनाम अन्यतमो ही कर्मभिः अविरुद्धो विषयः. उत्पत्त्यादीनाम अन्यतमो ही कर्मभिः अविरुद्धो विषयः. उत्पत्ति, आपति, संस्कृति, विकृति. By that
karma phala has no virodha. Karma phala will be of one of these only. Tatraiva nitya karma chodana anupapattehe. उपशांतत्वात् नित्य कर्म फलत्वेन मोक्षस तद व्यवधान अज्ञान निवृत्तिर्वा न शक्यते कल्पयितुम्. तत्रैव नित्य कर्म चोदना अनुपपत्तेः. उपशांतत्वात् नित्य कर्म फलत्वेन मोक्षः तद व्यवधान अज्ञान निवृत्तिर्वा न शक्यते कल्पयितुम्. सो नित्य कर्म विधि चोदना is not available there in case of तत्रैव नित्य कर्म चोदना अनुपपत्तेः उपशांतत्वात् नित्य कर्म फलत्वेन मोक्षः तद व्यवधान अज्ञान निवृत्तिर्वा. नित्य कर्म फल है मोक्ष और नित्य कर्म फल है व्यवधान अज्ञान निवृत्ति. कल्पना you cannot do. Why? Because in moksha actually there is no vidhi. If you say nitya karma has vidhi, which Purvapakshi said there is vidhi, nitya karma chodana anupapattehe. So nitya karma chodana is not available when it comes to moksha phala. And otherwise also नित्य कर्म फलत्वेन मोक्ष और व्यवधान निवृत्ति कल्पना यू कैन नॉट डू. कर्म अज्ञानयोर विरोधाभावात् दृष्टम सामर्थ्यम यस्मिन् उत्पत्त्यादौ तद विषयत्वाच्च कर्मणः तद विलक्षणे मोक्षे न व्यापारः. कर्म अज्ञानयोः विरोधाभाव. बिटवीन कर्म एंड अज्ञान देयर इज नो विरोध. विरोधाभावात् दृष्टम सामर्थ्यम. So where is the samarthya seen? Where utpatti, apti, samskriti, etc. happens. Yasmin utpattyadau tad vishayatvacha karmanah tad vilakshane mokshe na vyapara. So in utpattyadi there samarthya is there. In moksha karmanah vyapara na. उत्पत्त्यादि विषय उत्पत्त्यादौ तद विषयत्वाच्च कर्मणः सामर्थ्यम बट नॉट इन द विलक्षण मोक्ष. सी टीका लिटिल बिट, I mean भाष्य. कर्मा विरुद्ध विषय एव श्रुतार्थापत्तेः क्षीणत्वात् नित्यो मोक्षः फलं कल्पयितुं न शक्यः तद व्यवधान अज्ञान निवृत्तिर्वा. कर्म अविरुद्ध विषय एवं श्रुतार्थापत्ति. श्रुत अर्थापत्ति इज कर्म अविरुद्ध विषय एवं. उत्पत्त्यादिमति 10 नंबर टिप्पणी. कर्म अविरुद्ध विषय इज उत्पत्ति देर, श्रुतार्थापत्ति इज देर. In other words, Purvapakshi's Arthapatti was there. What was Purvapakshi's Arthapatti? That moksha phalam is there for which no other karma is given and nitya karma phalam is not given. Therefore, moksha alone is the phalam of nitya karma. Siddhanti says if you want to do Arthapatti, Arthapatti will be of this type. That whatever is the phalam of nitya karma, it will be Utpatti, Apti, Samskriti, Vikriti only.
Why? Because it will have anitya phalam. Nityo moksha phalam kalpayitum na shakya. But nitya phala kalpana you cannot do through your arthapatti. Kalpayitum na shakya. Tad vyavadhana ajnan nivrittirva. Now every time he uses both. Moksha means swarupavasthiti or tad vyavadhana ajnan nivrittirva. So either way it is not, because you want vyavadhana ajnan nivritti also as nitya phalam. If somebody does moksha kalpana, it is some wonderful thing. Or how Siddhanti said, it is only ajnan nivritti, there is nothing else. Either way you want nitya phalam, and karma will not give you nitya phalam. अविरुद्धत्वात् दृष्ट सामर्थ्य विषयत्वाच्च. Because utpatyadi phalam is aviruddha of karma, and drishta samarthya vishaya is also there. Karma samarthya is seen to give utpatti apti. What is not seen, that kalpana you should not do. If you have seen someone singing, let's say one place here, there place here, so you can do this kalpana. Okay, this person can sing now. You have never heard this person singing anywhere, and now you are imagining he will sing good. And when he starts, then all your kalpanas are shattered. So then you know what kalpana you have to do on the basis of some ground. टीका तथा च नित्य कर्म विधिवशात् पुरुष प्रवृत्ति संपादनाय फलं चेत कल्पयितव्यं तर्हि तद उत्पत्त्यादीनाम् अन्यतमम् एव तदविरुद्धं कल्प्यम् इत्यर्थः. नित्य कर्म विधिवशात् पूर्वस्य प्रवृत्ति संपादनाय फलं चेत कल्पयितव्यं. So now nitya karma vidhi is there to justify that whenever there is some such vidhi, some phalam also is there for purusha pravritti. You should do this. So then immediate thing is, okay, what will I get if I do it? So phalam chet kalpayitavyam tarhi tad utpatyadinam anyatamam eva tad aviruddham kalpyam. Then your kalpana should be that it will be one of these four, utpatyadi, which is aviruddham kalpana. अविरुद्धम कल्प्यम फलम, अविरुद्धा कल्पना. इति शब्दः श्रुतार्थापत्ति परिहार समाप्त्यर्थः. The श्रुतार्थापत्ति was mentioned. So श्रुतार्थापत्ति, अर्थापत्ति you should do in this way. When something pratyaksha is there, then for arthapatti your material will come from pratyaksha. If there is no pratyaksha, like Devadatta, Diva, Bhog, Bhungte, na Bhungte, so then arthapatti kalpana you will have to do from Shruti. In Shruti it is said that moksha is nitya, it is not apya, utpadya, samsarya, vikarya. Based on that you will have to do the kalpana. In Vedanta Paribhasha this will be explained, Shrutarthapatti, etc. In Shabda Pramana. मोक्ष एव नित्यानां कर्मणां फलत्वे कल्पयितव्यः पारिशेष्य न्यायात् इति शंकते. He says there is पारिशेष्य न्याय. What is that? मोक्ष एव नित्यानां कर्मणां फलत्वेन कल्पयितव्यः. Moksha alone should be the phalam of nitya karma. Why पारिशेष्य न्याय? What is पारिशेष्य न्याय? प्रसक्त प्रतिषेधे अप्रसक्त शिष्यमाणे संप्रत्ययः. प्रसक्त से प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात् शिष्यमाणे संप्रत्यय.
Now he himself explains what is Parisheshya Nyaya. See in Bhashya first. Parisheshya Nyayat moksha eva kalpaitavya iti chet. By Parisheshya Nyaya, moksha kalpana alone we have to do. Why? Sarvesham hi karmanam sarvam phalam. All other karmas have some or the other phalam. Sarvam phalam means yat kinchit phalam. Nacha अन्यद इतर कर्म फल व्यतिरेकेण फलम कल्पना योग्यम अस्ति. अन्यद इतर कर्म फल व्यतिरेकेण फलम कल्पना योग्यम न अस्ति. सो इतर कर्म सेकंड नंबर टिप्पणी नित्य कर्मणः सकाशात् इतरत यत् कर्म तत्फल अभिन्नम मोक्षाच्च अन्यत् फलम कल्पना योग्यम न अस्ति. पूर्वपक्षी says this. What is his suggestion? He says, for nitya karma, what phala kalpana we will do? You say nitya karma, you should not say it will give vrishti, rain. Why? There is another yaga for that. Kaririya vrishti kamo yajeta. Pashu yaga, Pashu yaga is there, it will give Pashu. Why you have to say nitya karma will give Pashu? Putra kamashti yaga is there. Rajasuya is there. A different karma will give you different phalam. So then what is remaining? Parishishtacha moksha. Sitika. Parishesha nyayam vishaderi. Sarvam means swarga, pashu, putradi. They all are already phalam of some or the other karma. Tadhapi. Mokshad anyadeva nitya karma phalam. Kim na syat tatra. Mokshad anyeva nitya karma phalam kim na syat. So he said, nacha अन्यद इतर कर्म फल व्यतिरेकेण फलम कल्पना योग्यम अस्ति. इतर कर्म फल व्यतिरेकेण, इतर मोक्ष कर्म फल व्यतिरेकेण फलम कल्पना योग्यम न अस्ति. मीन्स मोक्ष फल kalpana alone is you will have to do. Other than that, everything else is taken up. तथापि मोक्षाद अन्यदेव नित्य कर्म फलम की न स्यात् तत्राह न च. मोक्षस्यापि इतर कर्म फल निवेशम आशंक्य आह. मोक्षस्यापि इतर कर्म फल निवेशम आशंक्य. This is the only remaining one is moksha. Any other karma phala, their swarga, pashu, putra, their nivesha is already happened. Moksha nivesha has not happened anywhere as karma phala. It is like some seats are there. Everywhere Mahatma's name is written. One seat is there, Mahatma's name is not written. And some Mahatmas come. So now whose name is not there, I say, okay, other places others will sit. Who will sit there? This Mahatma is there, he will sit there whose name is not there. This is Parishesha Nyaya. In Samanya Vastu it works, okay? But if somebody else walks in and he says that seat is there, it is not meant for you. You have to sit down only. The Parishesha Nyaya doesn't work everywhere. Karma phala, if it is utpadyam apyam samskaryam vikaryam, it is anityam, you cannot say karma phalam will be moksha. Tasya phalatvam eva katham siddham. Such a ishto veda vidam phalam. Moksha is veda vidam. He says, Purvapakshi says, moksha is the ishta phalam for those who are the knowers of Veda. Mimamsakas. Parisheshaya
परिशेषाय परिशेष आयातम अर्थम निगमयति. परिशेष आयातम मीन्स परिशेषात आयातम अर्थम निगमयति. तस्मात् स एव कल्पयितव्य इति चेत् पूर्व पक्षी से मोक्ष अलोन वी विल डू कल्पना. न पारिशेष्य असिद्ध्या दूषयति. पारिशेष्य सिद्धि इज नॉट हैपनिंग हियर. कर्म फल व्यक्ति नाम आनंत्यात् पारिशेष्य न्याय अनुपपत्ति. पारिशेष्य न्याय will work where only limited results are there, limited causes you can identify, and therefore for only that much you will do which one will go where. One of them is not having a pair, then you say this will connect here. When karma phala there are so many, parishesha nyaya will not work there, because we don't know how many karma phalas are there for which karmas are given or not. So it is not possible. Asambhavat. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sudra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति.